Hi friends, welcome to the session Public Speaking Tips. As I have already told you the schedule, today we will be discussing about body language. दोस्तों आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसकेएम टॉक्स। आज हम पब्लिक स्पीकिंग टिप्स में सबसे पहला चैप्टर बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आप जो भी यहाँ से सीखोगे उसके बाद आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप आपकी लाइफ में इसको जब इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो भी लर्निंग आज का है इसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम में जो कुछ भी मैं डिस्कस करूँगा वो आप लोग शिद्दत से फॉलो करना, और फिर भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप ये प्रोग्राम, ये वीडियो को बार बार देख लेना, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो दोस्तों ये प्रोग्राम आपका ज़िंदगी बदल सकता है। कैरियर में अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर कैरियर। पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो टुवर्ड्स द लीडरशिप लेवल, टू अटेंड एनी मीटिंग, to conduct a meeting, you have to discuss with the vendor or maybe the clients. You need to have a good public speaking skill. Even in you talk about politics or wherever it may be, a good public speaker can win the hearts of people. So दोस्तों चलते हैं आज की पहला सेशन पर बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। चैप्टर 1, हाउ टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज इन पब्लिक स्पीकिंग। बॉडी लैंग्वेज की जब बात करते हैं, सो बॉडी राइट फ्रॉम हेड, आईज, स्पीकिंग, हैंड जेस्चर, बॉडी पोस्चर और आपकी लेग्स तक, ये पूरा बॉडी आप कैसे यूज करते हो व्हाइल पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको पता है, हम बोलते हैं बॉर्न सिंगर है या बॉर्न डांसर है या बॉर्न पब्लिक स्पीकर है। तो कुछ लोग पैदाइश से ही पब्लिक स्पीकर या सिंगर या डांसर बन के नहीं आया है। तो ये सब एक लर्नेबल स्किल है। जैसे आपको म्यूजिक सीखना है तो सारेगामापा सीखना पड़ेगा, तो डांस सीखना है तो आपको डांस की स्टेप्स सीखना पड़ेगा। सेम वे आपको पब्लिक स्पीकिंग अगर मास्टर बनना है, सो ये भी एक लर्नेबल स्किल है, आप सीख सकते हो। इसका डिफरेंट मॉड्यूल्स है। आप मॉड्यूल्स को सीखने के बाद आप आपकी लाइफ में जब प्रैक्टिस करोगे तब आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकता है, आप एक गुड प्रेजेंटर बन सकता है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, और जिसको आपकी कैरियर में काफ़ी लीडरशिप लेवल पे ऊपर जाने के लिए ये बिल्कुल मदद करते हैं। इट विल रियली हेल्प यू टू ग्रो इन योर लीडरशिप स्किल, वेयर इफ यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ पीपल। आई वुड लाइक टू शेयर यू वन statistics. Normally when we talk about public speaking, we talk about the content should be very good, the voice should be very good, okay, the systems and the processes should be very good. But you know, there is one very very big secret: body language. Body language is the most important thing when you talk about public speaking. 55% of the total public speaking body language contributes. दोस्तों आपको पता है 55% बॉडी लैंग्वेज कंट्रीब्यूट करता है, और बिल्कुल 38% आपकी वॉइस टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह होता है, और बाकी 7% खाली होता है वर्ड्स के ऊपर। हम काफ़ी बार कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन क्रिएटिंग द कंटेंट यूजिंग very good language and all we are trying to content, and if your body language is not good, and if your hand gestures are not good, and if your voice modulation are not good, then there is no point, your speech will not be successful. So दोस्तों 55% अगर बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में, सो आज दोस्तों आज देखते हैं, टुडे लेट अस सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ बेटर यू कैन यूज इट। तो सबसे पहले हम
हेड से चालू करते हो, तो जैसे आप कभी भी ऑडियंस को आप जब फेस करते हो, आपकी हेड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नीचे देख के या साइड में देख के ऐसा नहीं खड़ा रहना चाहिए. आपकी हेड, योर हेड शुड बी स्ट्रेट एंड यू शुड लुक एट द ऑडियंस. So this is clearly showing you are very confident before you speak. So once your head and your body posture is very clear and people will feel that you are confident, then the next one is what? Eye contact. हमने काफी बार देखा है लोग एक साइड देख के बात करते हैं और ज्यादातर एक पार्टिसिपेंट को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वो अगर हम हमारी जो स्पीच को जो रिस्पॉन्स देते हैं हम उसी को देख के ऑलवेज बात करते हैं. दूसरी बात, when some seniors are there, when they are sitting in the meeting, we always have a tendency to look at the senior and speak. We ignore the other participants. That is not the correct way. So what is eye contact? Eye contact is you need to see the entire audience right from left, center to right. And each time you need to change each participant so that during your speech you are covering the entire participants. The next what? Then your speech. Then third one is your hand gesture. So hand gesture is very very important. So hand gesture में क्या होता है कि काफी बार हम we stand like this and speak. This is not a good hand gesture. ये आपका एकदम closed body language बोलते हैं इसको, जो आप you are not receiving the feedback or you are not ready to get in touch with people. You are very closed man. You are not having an open hand gesture. दूसरा, काफ़ी बार हम हाथ को पीछे रख ऐसे खड़े रहते हैं when we speak. This is also not good way of communicating with people, because when you stand like this, people will think that, oh, he is very egoistic person, that he thinks that a very authoritative person. We should be very simple when you are interacting with people. So your hand should be in front of your body. Now, when your hands are in front of your body, it should be at this level, exactly your chest level. And when you speak, you need to use your hands regularly. Hands gesture can be used for so many things. Like when you are talking to the people, when you are explaining, or maybe you are talking about a story. Like when you want to say, I saw a big thing. When you talk about big, you need to just expand your body and hand like this. मैंने बहुत बड़ा राक्षस को देखा है. So when you expand your hand, so people will feel that something big is there. वो रास्ता बहुत ही छोटा था. So when you show this kind of hand gesture, people will have that in mind that you are using your hand very well. Many times what we do, that we put our hands in our pocket and then we speak. So that is also not a good body posture. Never put your hands inside the pocket of your trouser. Leave it, keep it at this level, and you use your hands regularly. And suppose if you have got a pen or something in your hand, you can hold the pen like this, there is no problem, but your hand should be very very free. So hand gesture is very very important when you talk. Many times we should keep our hands like this. So many times we have got a habit of using our this ring. कुछ लोग ऐसे ऐसे रिंग्स को निकालते हैं, कुछ लोग बार बार काड़ा है जो हाथ में उसको ऐसे ऐसे करते हैं. So these are all not the very good hands. कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं. So these are the symptoms of nervousness. Keep your hands freely, and when you talk, you just move your hands left and right like this. And when you want to explain something, you can just talk like this. Okay. So showing something big, showing something small, the expression in your face and the hand gesture will definitely, you will be able to connect with the audience. So that is very very important. So using hand gesture is very very important. Don't just stand like this and speak, or put your hands inside your trouser, or maybe putting your hands on the backside and speak. So these are very very negative way of conducting talk, like doing like this. So no need, just keep your hand like this. Many times you can also keep like this when you are speaking. So this is very important. So hand gesture is the number one thing. Number two, I talked about eye contact. So there is a tip I would like to tell you how you can do a very good eye contact. Like you can use the Z shape. What is Z shape? So you got a set of audience here, people who are sitting in front of you. You are addressing them.
So the best way you can have a very good eye contact is you start from the back side, left hand side, last row, then straight away go to the right hand side of the last row, then come straight away to the left hand side of the front row, then straight away go to the right hand side of the front row. So this way you are creating a Z shape. So when you are doing like this, you are covering the entire audience. Your eye contact will be very good. So go to the left last row, then to the right last row, then come to the left first row, then go to the right first row. Every time you can change the participant so that everybody will be covered during this session. When you are on a one-on-one meeting or maybe with 2-3 people, eye contact is very, very important. So what is the best way you can have an eye contact is look at the eyeball of the person who is sitting in front of you. Just look at his eyeballs. So this is very clear. When I am looking at you, my eyes are very clear and I am listening what you are talking. So eye contact is very, very important, and you have to cover the entire participants from left to right. And I had already given a tips, Z shape, left, right, back, front. So this is a good way of using your eye contact. Now the position, the pose while you are standing. Many times people will always stand like this, taking support. So if there is a podium, they will take the support of the podium, or maybe they will cross the legs and stand like this. Okay, or maybe they will be just moving from this side to this side, this kind of standing position. A powerful standing position is like this. When you are standing, your feet should be 1 feet apart, and you will be standing in a powerful pose. We have also seen that हमने काफ़ी बार ये भी देखा है, लोग स्टेज पे खड़ा नहीं रहते हैं, वो लेफ्ट साइड चलते हैं, राइट साइड चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं, राइट साइड चलते हैं. This is also not a good kind of body language when you are addressing people. Why? Because वो ऑडियंस को आपकी तरफ ऐसे ऐसे देखना पड़ता है आप जब स्टेज पे चलते हो. जैसे आप जू में देखा है ना, टाइगर को केज के अंदर डालते तो वो लेफ्ट एंड राइट चलता है. इट इज जस्ट लाइक दैट. सो डोंट डू दैट. Stand in a powerful position. You have a good eye contact. Use your hand gestures. Keep your feet slightly apart, and just give your speech. Just deliver your speech. So that is the best way of body language. Now I have also seen that if you are conducting a training session, maybe an exercise where a lot of interaction is required, in that case you can move in between the tables and talk to the people. But when you are addressing like a public speaking and people who are sitting in the theater style and you are on the stage, just to stand, have a good eye contact, use your hand gestures and speak. So this will give lot of effect on your public speaking. Now the face expression. Face expression is very, very important. What is face expression? Like when you are going to talk about a story, when you are narrating some incident, like I was running very fast, so you have to show the kind of, it is not like that I was running, okay, was so happy, so that smile should come, the happiness should come in your face, okay. And when you are talking, use your hands, as I already told you. And when you are giving a shake hand to a person, look at his eyes straight away. So that is also very. Many people look down. Many people look up while speaking because they are fearing about addressing the people. They will talk like this or maybe talk like this. So these are these are the don'ts of body language, I can say. When some people may close their eyes while speaking. So that is also not a good body posture. Always remember, whenever you go to the stage, take a deep breath, smile, think and talk. You should think what you are going to talk. Think, take a pause, then you speak. Good. Take a deep breath, smile, think and talk. Expression, as I told you, very, very important. Right expression. Suppose if you are showing angry, the face should have anger.
when you're showing happiness, the face should have happiness. If you don't have the facial expressions, the effect will not come. As you know, non-verbal communication contributes to 93%. Only 7% contributes to verbal communication. So what is non-verbal communication? Your body language, how you react, how you talk to the people, and your expression. So these are very, very important. The other important point as far as body language is concerned, whenever you are presenting and you are showing something on the screen, don't just show your back. Stand on the side just like this. People should see the screen. People should not see your back. And then you describe, then you explain to them. So this is the ideal way of explaining. So in a nutshell, these are the certain tips I would like to share with you as far as body language is concerned. And please try to wear a good attire. Have a neat and clean ironed dress. If possible, wear a jacket or maybe tie. And your attire should be very neat and clean. It should be matching. And आप जब स्पीच देने जाओगे, जब आपके नाम बुलाएगा स्पीच में जाने के पहले, some people have got the habit of gaining confidence. वो जो टेंशन रिलीज करने के लिए कुछ लोग चूइंग गम भी खाते हैं. आपने स्पोर्ट्स में देखो, क्रिकेट में वगैरह में लोग चूइंग गम खाते हैं. क्यों खाते हैं? बिकॉज बिफोर बैटिंग के जाने के पहले उसको वो एक जो कॉन्फिडेंस मिलता है. सो आप भी चूइंग गम यूज़ कर सकते हो, नॉट वाइल स्पीकिंग. उसके पहले आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो वेटिंग टाइम है अगर आप चूइंग गम यूज़ करो तो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो दोस्तों, जो भी मैंने टिप्स दिए बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट एपिसोड में हम जब बात करेंगे, सो वी विल टॉक अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर हम बात करेंगे और वो नेक्स्ट सैटरडे होगा. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर कर लीजिए आपकी फैमिली मेम्बर्स और आपकी फ्रेंड्स, खास करके इफ यू आर अ मैनेजर और लीडर, आपकी टीम मेंबर के साथ. मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि कैरियर में अगर प्रोग्रेस करना है तो कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल की ज़रूरत है. मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि मैं मेरे जितने भी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करूं और आपको इसकी यूज़ हो जाए, आप इसको यूटिलाइज करें और आपको आपकी कैरियर में प्रोग्रेस मिले. इसी के साथ मैं ये सेशन आज ख़त्म करना चाहता हूँ. आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया SKM टॉक्स, तो सब्सक्राइब करिए ना. लाइक बटन अच्छा लगे तो दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज और सेशंस एपिसोड्स पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आने वाला है. हम बिल्कुल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. नमस्कार, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट.